Assalamu alaikum to everyone. The topic we are going to start today that is ideology of Pakistan. Before starting our topic, we should know what's the meaning of ideology. Ideology is a matter of the content of thinking characteristic of an individual, group or culture. यानी एक अंदाज या सोच का मवाद जो किसी फर्द ग्रो या सकाफत की खसूसियत हो. It means Pakistan should be a state where the Muslims should have an opportunity to live according to the faith, creed, based on Islamic principle. नज़रिया पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जहाँ मुसलमानों को इस्लामी असूलों पर मबनी अकीदे और मसलक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ये कुछ मकासद थे जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान को हासिल किया गया. After the War of Independence, the Muslims were greatly pressed by the Hindu as well as British. Social, political and economical condition of the Muslims were totally changed. जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों ने हिंदुओं ने मिल के ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ी थी, उसके बाद मुसलमानों की कंडीशन बहुत चेंज हो गई थी. यहाँ तक कि उनका सोशल सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप या इकोनॉमिकल सेटअप सब चेंज हो चुका था. माशरती तौर पर भी मुसलमान बहुत पस्ती में जा चुके थे, सोशली भी बहुत पस्ती में जा चुके थे और इकनॉमिकली भी बहुत पस्ती में जा चुके थे, क्योंकि हिंदुओं ने अपने ब्रिटिशर्स के साथ अलाइंस बना लिया था, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था. डैट इज़ वाई दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देयर ओन. यही वजह बनी जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मुमलिकत हासिल करने की ठान ली, क्योंकि उस ज़माने में हिंदू बहुत कंस्पायरेसीज़ कर रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके सारे सेटअप्स पे कब्ज़ा करना चाहते थे. किसी भी आइडियोलॉजी के पीछे कुछ मकासद होते हैं जिनकी बुनियाद पर एक नज़रिए की बुनियाद होती है. नाउ द सेटिंग अप ऑफ अ फ्री इस्लामिक सोसाइटी. The main objective of the creation of Pakistan was to establish a free Islamic society having its own identity and government. जो मेन मोटिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन मकसद था पाकिस्तान का हसूल का, वो ये था कि यहाँ पर इस्लामी ममलिकत कायम होनी चाहिए. एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी एक शनाख्त हो, अपनी एक गवर्नमेंट हो, जो रूल कर सके प्रैक्टिसिंग इट्स ओन सोशल प्रिंसिपल्स एंड रिलीजन, और अपने मज़हब की बुनियाद पे वो यहाँ पर हुकूमत कायम कर सके. एंड इन्वाइटिंग द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, पाकिस्तान जो था जिसकी बुनियाद रखी गई वो ये थी कि सारे इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर वो आके वो अपनी सारे जितने भी मसाइल थे, समाजी हों या इकनॉमिकल हों या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, वो सारे यहाँ के सॉर्ट आउट कर सकें. तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम कम्यूनल राइट्स. The communal rights on every other day made it clear that Hindus could monopolize the policies after the departure of the British. हर रोज़ जो फसादात, लड़ाइयाँ और झगड़े मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हो रहे थे, वो इस चीज़ का सबूत था कि अगर ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पर ख़त्म भी हो जाए तो हिंदू यहाँ पर कब्ज़ा कर लेंगे. The lives of Muslims could never be safe in the United India. मुसलमानों की ज़िंदगी वहाँ कहीं लिहाज से भी सेफ नहीं थी. The Hindu organization had again and again asserted that Hindu Raj would be imposed on India after the independence. जो उस ज़माने की हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थीं वो इस चीज़ पे मुनहसर थीं कि हिंदू राज ही कायम किया जाएगा ब्रिटिश राज के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक ब्रिटिश के साथ अलाइंस बना के हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था और वो मुसलमानों को कोई राइट देने के लिए तैयार नहीं थे. सो टू गेट रिड ऑफ दीज एट्रोसिटीज़ द मुस्लिम्स डिमांडेड देयर सेपरेट स्टेट. This is the reason on behalf of which Muslims decided to take their own separate homeland. Social and political development of the Muslims. After the War of Independence, 1857, the social environment was totally changed. The Muslims were scared of the caste system and other discriminations. जंग आज़ादी के बाद जो समाजी इन्वायरमेंट था, तो सोशल इन्वायरमेंट था, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था. मुस्लिम्स जो ज़माने के मुसलमान थे वो डर गए थे कि जो हिंदू हैं वो कास्ट सिस्टम यहाँ ले आएंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यानी किसी को किसी के राइट्स नहीं मिल सकेंगे, और मुसलमानों के राइट्स तो वो काफ़ी हद तक दबा चुके थे. दे कुड enjoy neither political nor social liberties. तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ना वो अब कोई समाजी
سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ پولیٹیکل، کیونکہ جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں تھیں ان سیٹس پہ سارے ہندو بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے کے ہندو آرگنائزیشنز نے ویسٹرن ایجوکیشن کو بہت زیادہ فلرش کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جتنی بھی سیاسی پارٹیز تھیں ان پہ سب سے زیادہ ہندوؤں کی اکثریت تھی. Therefore, they preferred to have a separate homeland in which they could live according to the teaching of Islam. انہوں نے اس زمانے کے مسلمانوں نے، کچھ رہنما نے یہ عزم اٹھایا کہ اب ہم اپنے لیے ایک سیپریٹ مملکت بنائیں گے. The protection of Muslim language. The Hindus did the best to replace Urdu by Hindi, but they did not succeed during British period. ہندو نے کافی حد تک کوشش کی کہ وہ ریپلیس کر دیں اردو لینگویج کو اپنی ہندی لینگویج سے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. If the South Asia had not get freedom without partition, the Hindu majority could very easily declare Hindi the official and national language. اگر بیچ میں پارٹیشن نہ ہوتی مسلم اور ہندو کی تو ہندو کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہوتے اپنی ہندی لینگویج رائٹس کرنے میں. The Hindu government could wipe out all the signs of Muslim culture. Therefore, the Muslim had no choice except putting a demand for Pakistan. ہندوؤں کی جو حکومت تھی انہوں نے جتنے بھی سائنس، جتنے مسلم کلچر تھا ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی بہت کوشش کی، اس کو یہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں کا نظریہ بہت مضبوط تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر اسلامی کلچر ہو، اسلامک ویلیوز کو فالو کیا جائے، اسلامک نارمز، رسوم و رواج سارے اسلامی ہونے چاہیے. تو ان کا نظریہ اسلام کی بنیاد پہ تھا. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسیکلی آئیڈیالوجی آف اسلام، کہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو آزاد کرایا گیا، ایک الگ مملکت لیا گیا ہے. سو دیز آر سم ایمز اینڈ آبجیکٹیو اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے ساتھ آؤں گی اور ایزیلی ایکسپلین کروں گی. اللہ حافظ.